Hello friends, remaining problems on vector identities are, so today's first problem is del of, show that del of a bar dot r bar is equal to a bar, show that del of a bar dot r bar is equal to a bar. So this is again standard result. For solving other problems we have to use this. So del of a bar dot r bar is equal to a bar. How we prove this? Here, so we have to assume here, because a bar and b bar is not given. So if we assume, suppose a bar is equal to a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar, and we know that r bar is x I bar plus yj bar plus zk bar. So these are the two vectors, and what we want del of a bar dot r bar, means first we have to find dot product of these two vectors, that is a bar dot r bar. So a bar dot r bar can be written as a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar dot xi bar plus yj bar plus zk bar. So what is this dot product? We know now dot product we can write direct multiplication of coefficients of I, j, k, that is a1x plus a2y plus a3z. Okay, now operate on del. So take LHS. Therefore, del of a bar dot r bar is equal to del is I bar dabba by dabba x plus j bar dabba by dabba y plus k bar dabba by dabba z of a bar dot r bar, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, डॉट नहीं है. सो a1x प्लस a2y प्लस a3z. ओके, सो हाउ वी राइट दिस? अभी देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज आई बार डाबा बाय डाबा एक्स ली, तो सेकंड ब्रैकेट हमें लिखना है a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस j बार इंटू डाबा बाय डाबा y लिखा, तो अगेन सेकंड ब्रैकेट लिखना है मुझे a1x प्लस a2y प्लस a3z. ओके, एंड प्लस k बार इंटू डाबा बाय डाबा z लिखा, तो अगेन a1x प्लस a2y प्लस a3z. ओके, अब देखो इसका हमें डेरिवेटिव लेना है. आई बार इंटू डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ दिस टोटल ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, a2 a3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है. तो ये जो टोटल टर्म है a2y प्लस a3z, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. ओनली वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ a1x, एंड a1x का डेरिवेटिव क्या आएगा? a1 प्लस सेम ईयर विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a2. सो j बार इंटू a2 प्लस k बार इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a3, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू z के लिए x एंड y क्या होगा? कांस्टेंट. एंड व्हाट इज दिस? a1 I बार प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार. दिस इज a बार इज इक्वल टू a बार. सो दिस शोज दैट del of a bar dot r bar is equal to a bar. This is again standard result. Del of a bar dot r bar is equal to a bar. Okay, now today's second problem is, second identity is, show that del square of del dot r bar upon r square is equal to 2 upon r raised to 4. ओके, देखो इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है? डेल स्क्वायर है, पहले ये इतना ही सॉल्व करना है. ये यही भी आ सकता है एग्जाम को. ओनली प्रूव दैट डेल डॉट आर बार अपॉन आर स्क्वायर समथिंग. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस. वी विल फाइंड दिस डेल डॉट आर बार अपॉन आर स्क्वायर. हाउ वी फाइंड डेल डॉट आर बार अपॉन आर स्क्वायर? देखो ये आर स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल डॉट आर रेस टू माइनस 2 इंटू आर बार. करेक्ट, इसको ऊपर लिया तो पावर नेगेटिव हो गई. एंड आर रेस टू माइनस 2 क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मीन्स ये फाई हो गया, ये यू बार हो गया. ओके, सो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? डेल फाई, डेल ऑफ आर रेस टू माइनस 2 डॉट आर बार प्लस फाई आर रेस टू माइनस 2 इंटू डेल डॉट आर बार. ओके, एंड डेल ऑफ आर रेस टू माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 2 इंटू आर रेस टू माइनस 3 इंटू डेल आर. इसका डेरिवेटिव सिंपली डॉट आर बार प्लस डेल डॉट आर बार इज 3, सो 3 इंटू आर रेस टू माइनस 2. ओके, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स आर रेस टू माइनस 3 इंटू डेल आर. डेल आर की वैल्यू आई आर बार अपॉन आर डॉट आर बार
प्लस 3 इंटू आर रेस टू माइनस टू. ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया माइनस टू आर रेस टू माइनस थ्री अपॉन आर इंटू आर बार डॉट आर बार. आर बार डॉट आर बार आता है आर स्क्वायर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, प्लस 3 आर रेस टू माइनस टू. ये आर स्क्वायर से 1 आर गेट कैंसल, मीन्स यहाँ पर आर रहेगा आर इंटू आर रेस टू माइनस थ्री, दैट इज माइनस टू. आर रेस टू माइनस थ्री इंटू आर क्या होगा, माइनस थ्री प्लस वन आर रेस टू माइनस टू प्लस थ्री आर रेस टू माइनस टू. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए आ गया आर रेस टू माइनस टू, मीन्स दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर. ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, शो दैट डेल डॉट आर बार अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, बट यू हैव टू प्रूव दैट डेल स्क्वायर ऑफ दिस. ओके, नाउ टेक LHS. डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट आर बार अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, बट डेल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको यदि मैंने एफ ऑफ आर लिया, सपोज इफ यू टेक एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो लास्ट वीडियो में क्या प्रूव किया हमने, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर क्या होता है, यहाँ से मिलेगा मुझे डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर, एंड डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर क्या होता है, f double dash of r plus 2 by r into f dash of r. You can use this way, this is one way, और another way you can write del square del dot del. Okay, बट उससे लेंथ बढ़ती है प्रॉब्लम की, सो ये इजी है. इसके लिए हमें क्या चाहिए, f double dash of r and f dash of r. सो f of r 1 upon r square लिया, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, f dash of r माइनस 1 अपॉन r रेस टू 4 इंटू 2r, मीन्स दिस इज माइनस 2 अपॉन r क्यूब. ओके, एंड एफ डबल डैश ऑफ आर माइनस 2 अपॉन आर क्यूब में ऐसे लिखता हूँ डेरिवेटिव सिंपल होने के लिए, उसको ऊपर लेता हूँ. ओके, एंड अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डबल डैश ऑफ आर आएगा माइनस 2 इंटू माइनस थ्री हो गया 6. ओके, मुझे माइनस 3 इंटू आर रेस टू माइनस 4, करेक्ट, मीन्स ये हो गया 6 आर रेस टू माइनस 4. सो पुट हियर देयरफॉर LHS इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ r. f डबल डैश ऑफ r की वैल्यू क्या है, 6 इंटू आर रेस टू माइनस 4, करेक्ट, 6 इंटू आर रेस टू माइनस 4 प्लस 2 बाय r इंटू f डैश ऑफ r. f डैश ऑफ r की वैल्यू क्या है, माइनस 2 इंटू आर रेस टू माइनस 3. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या आएगा, 6 इंटू आर रेस टू माइनस 4, एंड ये माइनस प्लस माइनस हो गया 2 इंटू 2 4, आर रेस टू माइनस 3 अपॉन आर, ए आर ऊपर लिया तो आर रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 पावर की एडिशन हो गई माइनस 4. सो 6 माइनस 4 इज 2 आर रेस टू माइनस 4, मीन दैट इज 2 अपॉन आर रेस टू 4 इज इक्वल टू RHS. ओके, मीन्स दिस इज रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज show that del square of r square into log r is equal to 5 plus 6 log r. This is again same problem. Del square of r square into log r is equal to 5 plus 6 log r. So here we have to take again f of r is equal to r square into log r, and what we want only f dash of r and f double dash of r. So firstly, how we find derivatives, f dash of r using u into v rule, r square keep as it is, derivative of log r is 1 by r, plus log r as it is, derivative of r square is 2r. Okay, so after simplification this is r plus 2r log r, because 1 r get cancel. f डबल डैश ऑफ r क्या आएगा, इसको डबल डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट किया तो r का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ r log r यूजिंग u इंटू v रूल, r इंटू डेरिवेटिव ऑफ log r इज 1 बाई r, प्लस log r इंटू डेरिवेटिव ऑफ r इज 1. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज r गेट कैंसल, 1 प्लस 2 प्लस log r इज इक्वल टू 3 प्लस log r. ये हो गया f डबल डैश ऑफ r. Therefore del square of r square into log r is equal to del square of f of r, because f of r is r square log r. Okay,
is equal to, we know result, f double dash of r plus 2 by r into f dash of r. So only put values here. F double dash of r is 3 plus log r plus 2 by r into f dash of r क्या आया, r plus 2 r log r. यहाँ पर देखो f dash of r की वैल्यू. ओके, so after simplification this is 3 plus log r plus this r get cancelled 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, this r get cancel, again this r get cancel, 2 into 2 4 हो गया, plus 4 log r. So 3 plus 2 is 5 plus 2 into 2 4 हो गया, 5 plus 5 log r आ रहा है. ये कुछ तो मिस्टेक है यहाँ. Here this 2 is multiple, so here 2 log r, 3 plus 2 log r, here 2, so 4 plus 2 is 6 log r. Okay, so this shows that del square of r square into log r is equal to 5 plus 6 log r. Okay, thank you.